Su'al. Good evening, everyone, and welcome to Malton Women Council's Wednesday session, which is for seniors. And there is going on our new series of mental health, seniors mental health ambassadorship projects series, and in which our different ambassadors comes and they do the different topics. So today's session is about effective communication for positive relationship, and Madan Chauhan is our presenter. Let me introduce Madan Chauhan. Before introduction of Madan Chauhan ji, let me inform everyone our today's session is going to be live on Facebook and also being recorded, and later on it will be uploaded on YouTube video. So if someone is not comfortable to show her or his videos, so they can stop the camera and enjoy the session. Madan Chauhan is a yoga teacher, motivational speaker, volunteer with many senior clubs, help youth within the community to be better communicators and leaders. Love listening to music, especially instrumental. Motto of Madan Uncle is, your health is in your hand. So today's topic is effective communication for positive relationship. Welcome, Madan Uncle. Now, mic is yours. Thank you very much, Gulnaz. Let me share my screen first. Did you see this? Does everybody see the screen? Yes, we can see. Okay. Our topic is, as you mentioned, effective communication and positive relationship. I will be talking why communication is more important and why positive relations are more important. I think saying the word more important is not appropriate. They both are important and we can't do one without the other. And let me tell you first my disclaimer. My disclaimer is that I'm not a doctor, I'm not a scholar. All this information is taken from Google or other sources. So please use it with your common sense wherever you're using. So don't rely on that everything is being said is somewhere authority. Most of things are common sense things has been used and said. Now, the question comes, who came first? Is it the communication or is it the relation? Now, I do not know if anybody can tell which we used first. Is it we communicate first or we use relationship first? Anybody can raise hand or say something? Communication. Communication. I agree with you, Narendraji. I was talking this morning to another senior group. I asked the same question. And they all said the same thing, communication comes first. And I asked the person to explain to me how communication. And the example given to me was whenever you see somebody, whether verbally or not verbally, you begin to communicate with that person through your visual or whatever you hear. But to me, they are the two sides of the same coin, right? Depending on what you're doing, what is it first, that's what is happening. Now, let me take you to next one is, there are certain words we use throughout our everyday life. I have abbreviated them. Some of them you may know, some of them you may not know. And if you know, you can tell me. If you don't, then that's okay too. And I'm going to say
These are some of the important words I took. This is a part of the communication, that how we communicate and how we abbreviate things in our mind. The first one is TWA. Anybody know what the TWA stand for? There was an airline TWA, Trans World America. But to me, it is not that. It's saying think, word, and action. We think, then we give the shape of the words to the thinking, then we take an action. So TWA is think, word, and action. The next one is ATB. We use it same all the time. Most of the time, we say to somebody, all the best. We use it. Most commonly say, we all the best. Wish you all the best. So these are all part of the communication, and with the new technology, this Zoom and others, lots of people using abbreviations. If you do not understand the abbreviations of those, then you probably may not be able to communicate to them. The next one I have is WFH. You probably heard that. We use it all the time here again. Work from home. These are the new technical terms that come up. They were never there 2-3 years ago. The next comes is YAM. We have said today what 10 times already, you are muted. Right? We often say that you are muted. So that's what it is. And then we have POW. That maybe you think is a prisoner of war, but it's the power of the words. What we say, how much power they have. And the next one is YKWIM. This is the one word which I say is used and is misunderstood. Gulnaz, you have a question? Uncle, You know what I POW, mean. power of woman. Yeah, power of woman too. There are many words, but I just took it what I thought is appropriately today, right? Okay, YKWIM. You probably heard this. You know what I mean. You know what I mean. This is something I assume you know what I mean. You may not know it, but I assume you know what I mean. So this is the one word which I think is not properly understood. And why it's used, I hear it, I don't know, many times a day. I use it myself too. The next one is FORM. I'm not going to explain to you this one yet. I'll bring it up into my one of the next screens. Now, with everything we do, there's a certain rules that apply. Doesn't make what we do, there's always certain rules that apply there, and we use that rule. I'm going to ask you, saying there's some basic rules of communication and relationship. Many of you who have studied maths, they probably have used the word relational. Now, I'm going to just display some number here. They have no meaning, just these are numbers. I just took it 642, there's no meaning. Well, how they can become meaningful if you relate to them, if you communicate them. I'm saying 6 can be 4 plus 2, or 4 can be 6 minus 2, or 2 can be 6 minus 4. And all these signs, equal sign, plus sign, minus sign, these are called relational operators in the mathematical terms. They create relations between you and the other person you're talking to. Now, to communicate and in the relationship, what is the first thing you think is required or important? Any of these, communicate and relation. Anybody?
All right, I won't waste too much time. Connect. Before we connect to anybody, we can't go ahead. We cannot communicate. We cannot create a relationship. Now, to connect to somebody, for example, here, I take the example of Gulnaz. Gulnaz, I don't know you from past or don't know you at all. I know you are a nice person, you look nice, but how I make a connection with you? I have to know something about you, right? And what that is, this is the word called form. I will, when I talk to you, I will ask you, what's your family? Are you married? Are you single? You have children? You have a brother, sister? What's your family? Then I probably ask you, what do you do? You say, I'm a biologist. I say, oh, by the way, what's your faith, religion, or what else do you do? Say, oh, I like playing squash, or I like playing hockey, whatever it is. Then M is something else, maybe. Oh, do you make, you may be making good money in your profession, or what else do you do? So this word form make me know more about you. Once I make a know about more about you, that becomes my understanding about you. So to communicate and to form a relationship, we have to connect first to anybody and then understand. This applies to animals as well. If you have a dog, you have to understand about the dog. You have to give a name to the dog. You have to know which breed the dog comes from. And also you're saying whether this dog loses hair or not. These are all knowing the qualities of the person or the animal which you are going to connect with or to have a relationship. So the word form I mentioned there, I'm going to tell you later. This is the form I use most of the time when I meet anybody. In the first few minutes, I know about that person, what that person is. Yes, Uzma, you have a question? So, Uncle, in Western context, this is not appropriate in your first meeting to ask about the family, to ask about the religion, to ask about the money. So it's just a generic conversation to start with. Okay, what do you do? Okay, Uzma, I never knew you. I see you. First of all, I ask you, what's your name? You will tell me your name, right? Right. Then I might say, by the way, I'd like to know more about you. You have children or you come from this one? Because I'm trying to, you're saying you don't say this, you say, don't say it, right? If you don't want to say it. But if I want to know with you and make to form a connection with you, I have to know a little bit more than just the name. Because then this is where when you form connection, you talk, you say, oh, by the way, I am from Pakistan. I say, oh, Usman, I was born in Pakistan too. There's a connectivity or commonality happened. And you say, I have two brothers. I say, oh, what a coincidence. I have two brothers too. So these are the opening way of connecting. If you don't want to use religion, you can say, by the way, do you like any sport? You say, no, that's fine. Oh, you don't like it? You might ask me, what do you like? I say, oh, I like cricket. Oh, my brother was a captain in the cricket. Money or miscellaneous, that's something else you dependingly, what else do you do? We say, oh, do you do anything other than that? You can say, no, that's the end of it. Yes, something to start. So the word form is in your opening statement to know about other person. And this is like you guys, and not you only, everybody does that one way or the other. When you meet another person on the train or on the street, you use these ones without knowing you're using it. Okay, let's go to the next one. There are two things to remember. Now, what are the two things you have to remember? Let me give you one. Your thoughts when you are alone. Why your thoughts are important when you are alone? You heard the saying,
empty brain is a devil's workshop. Because when you are alone, your thoughts could become devils for you. So you have to be very careful about your thoughts. And when you are with the people, your words are very important what you're saying. So these two things, thought is onto yourself alone, words is when you're in more than one person. Words, if you're talking to yourself, is just your thoughts you are talking to yourself. Now, I'm going to show you something next, where you want to tell me what the letter is missing. In these ones, what letter is missing? I. I. So what that I mean? I'm important. Thought, which is only to me, I, alone, right? That's why it's against that thought. Now, what word is one letter is missing in these words? You. So that means you are equally important. So until I and you are there, no connection or relation will be made. So it's important when you're alone, which is I, your thoughts. When you're other people, they're like you, other person, the words are very important of yours. How do you say things and how do you communicate? The next I'm going to show you something very, very important. If you can tell me this one, you will get an award for that. Cosma, your hand up. No, uncle, I was just praising Oh, okay. your last slide. Okay, what was this? What's this thing? Yes, Narendraji. This is actually tongue, but it's shaped just like heart. Well, it is a tongue. You can see the teeth there. Okay, what does the tongue do? It didn't taste good. It do what? It's dangerous than any It weapon. is very dangerous. The tongue has no bone which is strong enough to break the heart of somebody, or it can break any relations, or it can make any relations. The tongue is so important that it can make a relation or break a relation. And then I'm going to show you the next one. You probably have seen this picture many times. And these are called, if I'm not wrong, 3 monkeys of Mahatma Gandhi. Yeah. You know what they mean? The first one is saying what? Don't see bad. Don't see bad. What the next one saying? Don't hear bad. And the third one? Don't speak bad. Wow, these are the good things to have a good communication. Sometimes you have to blind yourself. Sometimes you have not to hear anything. Sometimes you have not to say anything. I'm going to show you another slide, next one. What do you read this one? Just do nothing, right? Just do nothing. There's no meaning. And the next slide is showing it is impossible. Well, if you have these two words, I do not know if you can manipulate these words or change it and adjust it. But before I do that, when we're looking at these 3 monkeys, there's an option you have to look at it from a different angle, to see it from different points of view. Now, if these two pictures here just do nothing, or it is impossible, if I look at this other angle and join them together, what it becomes? Just do it. Nothing is Nothing impossible. is impossible. That's so simple. On its own, do nothing is a negative. It's impossible is negative. When I look at it from different angle and put it two together, it becomes just do it. Nothing is impossible. So to have your relationship of communication is not impossible. It is everything is possible. You can do that. Life is an echo. Do you know what that means? Life is an echo. Let me share you a story here a little bit. Once a father took his child to a jungle in the mountains and he starts shouting, hello. And the sound comes from back, hello, how are you?
sound comes from back, how are you? The son said, Dad, there's somebody there who copying you. And the dad said to the son, he said, you try this something. He said, my name is John. And voice comes back, my name is John. He said, I'm 10 years old. A voice comes, I'm 10 years old. And the guy said, Dad, how they know it and why they repeating my voice? Dad said, whatever you give, that's what you get. Whatever you do, that's what you receive. That's what the life is, an echo. Whatever you send out will come back to you. And whatever you sow, you will reap. Whatever you give, you will get. When you see others exist in you, do not judge. When we start judging all that, whatever you're doing, same as with the communication. However you communicate, they will come back to you the same way. How you try to form the relationship, they will come back the same way. So that's what it is now. The next one I'm showing it to you, the meaning of the communication. Communication is ability to ensure that people understand you, right? That's what the communication is. It's not only understanding it, it's also to know what you say, what they mean. I say, do you know what I mean? So your meaning of the message should be understood. And listening skill is very important. So listening to, you cannot reply properly to somebody if you do not listen properly. So listening skill is equally important as the speaking skill is. So developing both of these is the form of your communication, and to develop it all that, you need lots of patience. Now, I'm going to show you next, tell me, you see these 3-4 kids sitting there. Are they effectively communicating? Each of them have a cell phone in their hand. And they are just talking or doing themselves what they're doing. Do you think it's a effective communication? It isn't. So what is an effective communication? There are some of the qualities of effective communication. Your message should be clear. Your message should be correct. Your message should be complete and precise. Message should be reliable, and consideration of the receiver or recipient. And anyway, let's go. Let's see. Okay, the next one is, you see this picture. What do you see this picture? Think before you speak. Well, think before you speak. Connection between tongue and brain. Connection. The word is connection. Until your brain is connected to your tongue, you are not going to be connected. So make sure it's connected before you start something. Same as with your cell phone or other electrical plugs, until you plug it, you don't know. Now, this is a part of the effective communication. Connection there. So communication is the exchanging of the information, ideas, and options. That's what the communication is. Conveying your message to somebody else. Well, what do you get out of that? You get better in your team. That's what the idea of the communication is. To be better, your team is better, you're working together. It forms a better relationship. It's easier and better decision making. If you understand it, if you can exchange it properly, it helps you all that. And it's also a better problem solving. And also it's going to increase engagement and improve productivity. I would like to say something here and give the credit to all the Women Council team. The way they're doing it, they're all trying to make it all that. They're trying to make it everything better.
And this is one important step is in the effective communication, how you do it. I'll take you to the next one. What this lady is doing? Telling story. Telling a story. So communication is telling a story. When you tell a story to somebody, it makes easier for the person to understand than you talking straight away without any relationship. And a story creates a relationship, whoever you're telling. If you remember your grandma, nani, dadi, whoever you remember you do, they started a story with you when you were children. I'm sure you do the same thing with your grandchildren's or children's, the stories. Now, in the story, you have to be careful about something this. Now, what is this picture telling you? There's a heart in the jail and the brain outside, and the brain has the key. So what they are telling each other? दिल की बात नहीं माननी चाहिए, दिमाग की बात माननी चाहिए. दिल की बात नहीं माननी चाहिए, दिमाग की बात माननी चाहिए. What it is, sometimes we allow emotion to control ourselves. So that's what it's saying. Do not allow your emotion to overpower your intelligence. It does happen. Okay? So now we're going to talk about essentials of staying in touch. One of them is this. Anybody remember this phone? Yes. Now with this phone, is this phone connected to somebody or something? Yeah. Okay. If you look at this, it's an earpiece and mouthpiece connected to the main phone, right, with this cable. And also this phone was connected to a wall, right? So when this phone was there, phone is connected, but you were free to pick up the phone or not to pick up the phone, answer the phone or not to answer the phone. In the olden days, phone was one place and everybody go to the phone there to do it. Now what is being replaced by? Is replaced by these things. One phone making you selfie, one phone making you listen to something, one making videos and recordings and everything. Now with this phone, this phone is not connected to anything, but like wirely, like this phone was connected wirely. You can't take this phone anywhere outside the house. Now this phone is now connected, but you are not free at all. In this phone, you were free, but in this one, this was connected, you are free. This is not connected to anything because it's called wirelessly, but you are connected to everyone. So technology have changed from this phone to this phone. Freedom to slavery. Now we have become slave of our cell phone, right? Now we are going to go something next one here. Is there a class that teaches you how to speak? There are some, but they're not only common. But when you speak, that might tell you your class. They know when you speak it, what kind of person you are. You probably have heard, you do not know a fool until he opens the mouth. So there isn't a class that teaches you how to speak, but there's a class when you speak it that defines you, what kind of person you are. The art of conversation, like how we speak it, and not to say the right thing at the right time. So what is that then? If not to say the right thing at the right time, what could be the message then? The art of conversation or art of communication is not only to say the right thing at the right time. What else could be? But also to leave unsaid and wrong things at the tempting moment. Sometimes you remember those three monkeys? You maybe have to keep mouth shut.
or you didn't hear anything. That's also part of the communication. Now we are going to go next into the relationship, but I'm going to show you something which you probably have seen it every day. And let me tell you what does that mean. Is the relationship a complex thing? Is the relationship a complex? But I think it's as complex as this. What is this? Oh my God, I'm hungry. Pizza. Pizza. Okay. What are the definitions? There are three things in this pizza. If you understand that about the pizza, then you will understand about the relationship, or especially the relationship to a female. Okay. Can anybody say what are the three main things the pizza? It comes in a square and it's served as round, and we eat it as a triangle. Wow. Who said that? Harjeet Bamra. Wow, Harjeet. Now you understand the communication and the relationship. Yes, it's a complex relationship. And it is complex. It is complex. Once you understand why the pizza is round and packed in square boxes and eaten in a triangle, then you understand a woman, a person, lady, female. It's very difficult. They say it's even for the God to understand a woman is that complex. Well, let's go into the complex, into the relationship now. I mean, this is all part of the relationship. If you are, most commonly we say relationship, use word as a woman with a husband and wife, or it could be mother and the child, or it could be sister and brother. There very rarely people talk about male-to-male relationship or female-to-female relationship. Whenever you say, are you in a relation? They think of that, oh, this is like a husband and wife or boyfriend and girlfriend. Building a better relationship. It's not only better relationship, we should make a positive relationship. And our theme was effective communication and a positive relationship. Well, why we emphasize on the positive relationship? If you want to positive, they have to be negative as well. Otherwise, they can't be positive. If there is all the time day and no night, there will be no value of the day. If there's a fall now and you're saying, oh my God, it's getting cold, it's only you feeling it because you was in the warmth a few days ago. You're feeling warm of the summer. So the positivity of a relationship is only valuable when we see we had a negative relationship. Now let's talk about this relationship now. This relationship is stronger when both do what? Between the two people we're talking about, or could be more than two, when your relationship becomes stronger, doing what? What do you do to make the relationship a strong relationship or a positive relationship? You have to understand the mistakes and forgive them. If you don't understand why the person is doing it, why is he making a mistake, why he is saying something wrong, you cannot make a relationship stronger. So relationship gets stronger when both of you are willing to understand mistakes and forgive each other. So to build a relationship stronger in anyone, with a family or outside or at work, you have to understand the mistakes to do it. Now, next we're talking about the relationship with the children. We all say we should have a good relationship with the children. How do we create the relationship with the children? I'm sure you all have children or grandchildren. You have done the work to make a good relationship with them. Let me take it there. The positive relationship between the families and children are the building blocks of a healthy friendship. You have heard so many times, I have so many times, become a friend with your children.
why not we take every other person like a friend? Wife as a friend, mother as a friend, sister as a friend, father as a friend, brother as a friend, if that's important. But let's take it how we do it with the children, one by one. First thing is, you should give a chance your child to make a decision. If you keep on doing everything for your child will not learn anything. And you will not form a good relationship with your child because child is saying, he or she is doing everything for me. I need to not to do anything. What the next thing to do is have a special play time with your child. Put aside some time where you can spend with your child and play with it. Give your child a choice where either answer is okay. Now, whenever you ask a question, child is going to answer it. Many times we have seen in the family, you put the child down because the child answered the wrong. When you do that, child is not going to love you. Even if he answers the wrong, you can explain to him in a loving way. Son, daughter, this is not the way it is. That's the way it is. So we do that. You say what you expect your child, say what you expect your child to do, not what don't want them to do. And we always say to children, don't do it, this, don't do that. We keep on saying, don't. You should expect child what they want to do and put your wordings, TWA, into that and make the child appropriately answer you. Point out to your child their strengths. It's also been seen in any relationship, if you keep on finding faults with your partner, with your child, at your work colleagues, sooner or later they will become fed up with you, they will leave you, your relations will break. So to do that, you always tell some strengths as well, some good points. I'm not saying don't say the bad thing, but it's also how you say it, not what you said, how you say it. So if you show the child's strengths, you will form a better relation with your child. Let your child know you love them with smile, hugs, and words. I think I may not be wrong if I say our families, many of them, they do not do that with their children too much. They don't hug them. They don't smile them. They don't say positive words. Those who do it, good luck and good thing they're doing it, their relationship becomes much better. So if you want your child to become a good relationship, do this, and I'm sure you will form a very good relation with your child. Next one is, what did you see this? Railway track. And what are the two people doing on that? They are running on the lines. Okay, well, we use this terminology in our relationship quite a lot of time. What does that mean? They are doing wrong thing. Sorry? They are doing wrong thing. They are doing the wrong thing. Well, if I say so, how many times you heard in your life, in your family, your marriage are like two railway lines. They run parallel, they never meet. So you two, husband and wife, you are two railway lines of the same track, and you have to go side by side, but you keep on balancing when you are walking on that. Sometimes you fall, sometimes you balance it. So that railway line is telling you about the relationship, how you have to maintain your relationship by balancing yourself from time to time, from point to point. Your relationship with anybody, with your father, mother, brother, friend, they all running parallel. If you start expecting only from one person all the things, this will not happen, it will not work. Now, why our eyes are only at the front?
Why your eyes are only on the front? Because you don't want to see at the back, right? There's more potential to see ahead than at the back. If you keep on looking at the back, what's going to happen? You're going into the back. Maybe something happened to you in the past. You keep on sticking to that. If you keep on bringing up something happened in the past, you're not going to move forward. So don't dwell on the things that happened in the past. Learn from them and move forward. It is both goes for the relationship and the communication, that God given you eyes up on the front to look forward, and don't dwell on the things that happened in the past. For any relationship, sometimes our relationship break when we keep on bringing up, oh, you did 10 years ago this thing. You did 20 years ago this thing. We keep on dwelling on that, and the relationship breaks. Relationships never die in a natural way. Then how do they die? No, we say there's no relation between you and me. When we say there's no relation between you and me, what's that mean? Our relationship is dead, right? But who killed that relationship? It's not that naturally the relationship got sick and died. It's done by our ego, by our attitude, by our ignorance. When we bring they never die, but they are broken. They are murdered, they are broken because of this ego, because of this our behavior, because of our ignorance. So that is to keep your relationship alive. You have to look forward, you have to understand each other, then we do it. All right, I'm going to bring the next step there. When your life gives you many reasons to break down or cry, what you should do? There is many things happen in your life which will make you cry, make you break down. You should find something to laugh away. You find something opposite to that, something to do positive. If you don't do that, your life will be a miserable life. You will keep on crying. You will stay unhappy. So whenever it happens in the life, there's something bad happens, which do happen. So at that time, find something positive, find something more valuable, find some reason to laugh, smile, and be strong. Now, we have also seen these three pictures again. The first one is what? What's the bad job? Don't see bad things. It's just saying like closing your eyes. And the second one saying, keep quiet, don't speak. Third one, don't listen. We just saw with the three monkeys. In the relationship, why these are important? In any relationship, you have to sometime do that. You have to blind yourself, stay silent, or become a deaf. No, sometimes you say, I haven't seen it. You saw it, but you're saying, I didn't see it. Or, I've got nothing to say. I got nothing to say. Or, I didn't hear you. I didn't hear what you said. Because you understand that if you speak at that time, it may break your relationship. It may danger your relationship. To avoid that, it's good thing is sometime become blind, become silent, or become deaf. It's for you to keep your relationship. Next thing is, great relationship is about only two things. I mean, if there's a third thing, you can tell me after that. What are the two things you have to keep the relationship going? There are many branches of the other two, but mainly there are two. What are they? Anybody know? In any relationship, with anyone,
Give and take. Give and take. Okay. Faith. What did you say, Narendraji? Faith. Faith. Yeah. Okay. Well, let me share with you. First thing is appreciating the similarity. Your relationship connection only become when you saying similarities. You know, saying, I said in the word when I said form, oh, you are from Pakistan, I was born in Pakistan. That's similarity. Oh, you work in IT. Oh, I was a teacher at IT. Oh, I'm with a woman's modern woman council. Oh, I know somebody. My niece is in that. These are the similarities which you start appreciating. When you appreciate it, bring closer to the next person. What is the second thing that you should know it? It's opposite to that. Respecting the differences. There are going to be differences in everyone. And everywhere there are differences, whether it's a small difference or a large difference. Whether it's, I don't know, it's going to be different types of things. When you respect those differences and start appreciating similarities, your relationship will become stronger. Nowadays, if you listen to these young kids, in your times, many of you got married, nobody knew who you're going to marry to. Didn't know the person. But today, they're saying, why are you dating? I want to know about that person beforehand. What his likings are, what his similarities are, what his differences are. To form the good relation, they want to know it beforehand. Well, if they understand that there beforehand, then they can work it on that. And if you focus on the differences, you will find many differences. If you focus on similarity, you will find many similarities. That's my next screen is saying, when you focus on the problems, you get problems. When you focus on the possibilities, you get possibilities and opportunities. It's what you start looking, that's what start attracting. And I was at this meeting today, I said there's something that when I bought my first car back in 1963, I thought I don't see that car on the road, only very few. But once I bought it, everywhere I see the same car, same make. A girl from my class there, she said, my brother was going to buy a Mercedes car. Before, we never noticed any Mercedes car. Moment I got it, every other car is a Mercedes car on the road. So whatever you focus on, whatever you think of, that's what you start getting. If you want to make your relationship better, it will become better. If you focus on the negativity, it will become negativity. Now then, we mentioned about positive relations, and positive relations should be a healthy relationship, right? Now, what does the healthy relationship do to you? What's the difference between positive relationship and a healthy relationship? Healthy relationship most likely will be a positive relationship. A positive relationship still be positive but may not be healthy. But when it's a healthy one, it should be positive. The reasons being, when you do have a relationship, you have a less stress because you are a positive and healthy together. And you will be having better healing power in yourself, between you and between your partner. And your behavior will be a better behavior, a healthy behavior. You have a greater sense of purpose. What's the purpose of you doing it? And you will live longer. So with a healthy relationship, these things will happen in your life. Who does not want any of those? Who wants stress? Anybody wants stress? No. Anybody don't want to do the healing? So if you don't want any of these, have a healthy relation between your family members, your children, your siblings, your parents, your spouse.
Because if you do that, all this will happen. And this starts with the communication. The best thing to spend on in your relation, what is the best thing you can spend in your relationship? Yes? Moniji? Give time. Give time. You are on the dot. Is the time, the conversation, understanding and honesty and the trust, like Narendraji said before. If in your relationship, you can give time to your children, to your family, to your spouse, to your siblings, or anybody else you have, even at work. Now, when we are doing between Modern Women Council and us, the audience or the members, we are spending time to make an effort to send WhatsApp messages and then follow it up. And all those is the time spent. So that's what you do, and that keeps your relation going. Is falling in love is easy? Not. Not. Well, if you have fallen in love, what will happen? Will it be easy? Well, anyway, let's say falling in love is easy, but staying in love is very special or difficult. Why is that? I'm sure some of you been married more than 40, 50 years. I'm going to share you a couple who've been married for 60 years. And there should be understanding from both the sides. Yeah. I just remembered a song to do that. How can you stay in marriage for 60 years or longer? मेरे को याद आया, well, the couple is this one. तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं इन्हीं दांव पर प्यार आता है मुझे. वो रूठती है मैं मनाता हूं, मैं रूठता हूं वो मनाती है. अगर एक रिलेशन में आप अंडरस्टैंड करें, ट्रस्ट करें, ऑनेस्टी रखें, एक दूसरे को मनाते रहें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें, the relation will be long enough. We have been married for 60 years. Now, if somebody is married for 60, do you think should get some reward? There must be. There is this reward, a letter from the Queen. It says, Mr. Madan Chauhan and Kamala Chauhan, I'm delighted to hear that you are celebrating the 60th anniversary of your wedding and send you my warmest congratulations and good wishes on your splendid occasion. Congratulations. I think it was a good thing and we deserved it. Well, not what deserved it, but we did it. Now, I should go back. Never leave a true relation for small things. What are these things? Few faults. There are faults in everybody. Nobody is perfect. And nobody is correct all the time. In the end, the affection is always greater than the perfection. If you have affection, you have a love for each other, it's more than a perfection. If you're doing that, you should have a good relationship. And that all comes from a good communication as well. Now, sometimes we leave other person, we go to extent to divorce, saying, oh, that person is not perfect, or he has too many faults. Well, who doesn't have a fault? Well, let me take it a little bit one. Life is beautiful. Do you believe life is beautiful? Yes. Everybody believe? Well, take 1 minute, 1 day, 1 hour. That will not come back again in your life. So avoid fighting, arguing, speaking angrily, or loving to each person. 1 minute. 1 minute can save your relation. 1 minute can kill your relation. 1 word can kill your relation. 1 word can save your relation.
one time keeping quiet, one time closing your ears, one time closing your eyes can save your relationship. Isn't that important thing? Well, there is a message from the Queen again. What she learned and what she said. She's saying, we all need to get the balance right between our action and reflection. With so many distractions, it's easy to forget to pause and take a stock. What that mean is... Sorry to interrupt. रिवा जी ने कुछ पूछना है. हाँ जी. मैं 1 मिनट में खत्म होने वाली. Then we will take a question answer. Is that okay? This is the last slide. Okay, uncle. Okay. Who to be responsible in your relationship? Both. Who is responsible? Both. Both. Well, whose life is it? Yours. So you are responsible. Not both. You are responsible. Whoever is it. Don't make other person responsible. Become yourself responsible. Because it's your life. If you think you can do without a relationship, that's your thinking and your life. Or if you can go with it, it's also your life. And also, how do you communicate during this period? It's all up to you, how you do it. With that, I say, thank you very much. And I'm back onto you with the question and answer now. And I hope it was very useful. Thank you, Madan uncle. रेवा जी हैं और उसके बाद मिता जी. हाँ जी, रेवा जी. मदन जी नमस्कार. बड़ा अच्छा आपने एनलाइटन किया अपने लेक्चर के साथ. पर आई हैव 2 क्वेश्चंस. एक आपने प्रेजुडिस की बात करी कि वी शुड नॉट बी प्रेजुडिस्ड. उसी के इमीडिएटली बाद आपने कहा कि औरत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है. नोबडी हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड वुमन, नॉट इवन गॉड. तो ये तो बहुत बड़ा प्रेजुडिस है आपके मन में. नहीं, it's again looking at say so. This is a very patriarchal word which you should not use it, because the woman is an equal human being as a man is. तो ये जेंडर के पे नहीं है डिपेंडेंट कि आप कितने कॉम्प्लेक्स हैं. A man can be as complex as a woman can be. Okay, I appreciate रेवा जी आपका जो क्वेश्चन है. मैं एक बात पूछूंगा आपसे ही. आज तक जो आप सुनती आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो ये ऐसे क्यों कहा जाता है? एग्जांपल देके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ वुमन. व्हाई दे से दैट? आई एम जस्ट टुडे. ये सदियों से अच्छा हो रहा है आज. वो क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 50% पॉपुलेशन पे सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स का ब्लेम लगाकर उसको एक तरफ फेंक दिया जाए. अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि ये ब्लेम लगाया गया है. 50% पॉपुलेशन जो है वो आराम से अपनी जिंदगी जिए, इसलिए कहा गया. इट इज अ वेरी पेट्रियार्कल माइंडसेट जो कि हटाना चाहिए. कि औरतों की डोमेस्टिक वायलेंस कितनी होती है. आपने कहा कि डिवोर्सेस के लिए आपको डिवोर्स नहीं करना चाहिए. अब घरों में इतनी नहीं कहा. नहीं, आपने कहा कि छोटी सी बात से डिवोर्स हो जाते हैं. और उसमें आपने एक बार भी डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस एट होम, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, कितनी तरह की वायलेंस घर पे होती है, फाइनेंशियल वायलेंस, सब कुछ होती है. उसकी वजह से ही ये सब कुछ होते हैं. यू नो, इट इज नॉट इजी टू लिव एज अ वुमन. It's a very I agree, but one thing I can say, Reva ji, I'm not a woman, so very difficult for me to say it's difficult or not. But it is difficult. I agree with you. But it's equally difficult for the man as well. The man's role as well. पर आप काफी जैसे कि ये लेक्चर्स देते हैं तो एनलाइटन करते हैं, तो आपको प्लीज इस पे काम करना चाहिए. Thank you very much. I will keep in mind. Yes, thank you very much. थैंक यू जी. हाँ जी, मीता जी. थैंक यू सो मच मदन जी. तो मैं इसमें एक
बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ रेवा से 100%। हम एक सोच लेकर नहीं चल सकते और एक तरफा सोच लेकर तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो हम उसकी एक्चुअल उसकी जो जेन्युइननेस है उसको अच्छे से चेक करके फिर हम उसके बारे में बात करें। हम बहुत सारे लोगों को यहाँ सुनते हैं, तो हम कभी किसी के भी मुंह से ये नहीं सुनते कि men are bad या men are violent या men are like that और men are not good या men are dominating और things like that और complex और anything और men are complex और anything, ठीक है। ये तो 100% मैं रेवा से एग्री करती हूँ, वो तो बात हो चुकी है। तो मैं एक इसमें जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप होती है वो कितनी लंबी चल रही है, कितने अच्छे से चलती है, किस तरह से चलती है, एवरी रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स। उसमें कितनी एडजस्टमेंट कौन कर रहा है, कितना कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है, बाहर से कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। तो जब सर्टिफिकेट की बात आती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर के लोगों का या किसी आउटसाइडर के सर्टिफिकेट की कोई रेलेवेंस होती है इसमें। ये रिलेशनशिप्स टोटली प्राइवेट चीज हैं और अपनी रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जिनका आपने रेफरेंस दिया उनके हमने बहुत सारी न्यूज बहुत हमेशा हमारे बचपन से हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तो कोई हमें सर्टिफिकेट देने के लायक खुद है या नहीं है, इसका जजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो आई टोटली स्ट्रांगली बिलीव कि रिलेशनशिप्स पॉजिटिव रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दोनों साइड को करनी पड़ती है, पर मोस्टली एक तरफ से ज्यादा हो रही होती है, दूसरी तरफ से थोड़ी कम हो रही होती है। वो कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट दैट। सो दिस इज द थिंग, वी कैन नॉट से कि आई एम solely responsible for my relationship. No, the other person is equally responsible and other person should also own this responsibility. Thank you. थैंक यू मीता जी। मैंने ये नहीं कहा कहीं भी शायद कि एक ही आदमी एक ही पर्सन के लिए है जी, राइट। आपने नहीं कहा। जो बैलेंस देखिए, जब भी आप बैलेंस देते हैं, अगर ये पलड़ा भारी है तो आपको दूसरे को कुछ करना पड़ेगा उसको बराबर लाने के लिए, जहां उसमें से वेट निकालना पड़ेगा दूसरे पर वेट डालना पड़ेगा। तो लाइफ इज जस्ट लाइक सेम एज अ बैलेंस। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे उसको आप कहें कि मैंने नीचा हुआ, जहां मैंने कुछ गिव अप किया, जहां किसी और ने वेट डाला, जो भी है। दूसरी बात रही रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप इज अ प्राइवेट थिंग, आई एग्री विद एवरीबॉडी। then why it becomes public? It becomes public after a while, right? बड़ों के देखे, अभी आपने क्वींस के भी देखे होंगे रिलेशंस, उनके घर में क्या हुआ, they become public. I'm not going to go into that, but I'm saying it's still between the two people, whoever they are. They could be friends, they could be father, son, they could be brother, they could be sister, they could be husband and wife, anyone. Yeah. They are the one who have to make adjustments. How much adjustment? That depends on both of them. How much? If they want to keep the relationship, fine. If they don't want to keep the relationship, fine. अगर मैं अपने भाई के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता किसी कारण भी, तो I can say thank you very much. That's it. Right? अगर मैं रखना चाहता हूं तो obviously कहीं ना कहीं जहाँ मेरे को कुछ चीजों के लिए गिवन करना पड़ेगा, गिवन जहाँ उसको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं रहेगा। सो दिस इज अ जेनेरिक टर्म एंड जेनेरिकली आई यूज्ड इट हियर। जो भी इसमें कहा गया है समथिंग जेनेरिक, नथिंग टू टेक इट पर्सनल के औरतों के लिए ही क्यों है या आदमियों के लिए क्यों हुआ है। पर्सनली की बात नहीं है, मैं तो अपना ओपिनियन बता रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है, ये मैं सोचती हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट के बजाय या ये जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती हैं इनके साथ हम अपना कंपैरिजन क्यों करें। इनकी लाइफ का और जीने का तरीका और है, इनकी पोजीशन ही और है, इनके ऊपर फोकस होता है लोगों का। समटाइम्स दे सेल देयर ओन स्टोरीज देमसेल्व्स, तो बहुत कुछ है उसमें देखने वाला।
उनके साथ कंपैरिजन नहीं हम कर रहे हैं. सो मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे ऐसे लगता है. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन. थैंक यू. हाँ जी, गुलनाज आप पहले बात कर लो. मैंने बस यही बात करनी थी कि अच्छे रिलेशनशिप के लिए टॉलरेंस इज बहुत जरूरी है. लिसनिंग, टॉलरेंस, और समटाइम्स एक बंदा ज्यादा टॉलरेट करता है, दूसरा कम करता है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए आई थिंक टॉलरेंस इज आल्सो द मेन थिंग. टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर श्योर. वो बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. हाँ जी सुरजीत जी. I think giving space to each other is the most important thing. We should give space के एक दूसरे को अपनी अपनी space में रहना चाहिए. Then there will be, I think, less problem in the family. I agree with you. हाँ जी. और शौर्य हाँ अंकल आप कुछ कहना जी चाहेंगे? हरजीत जी, उसके बाद बसंत से. हाँ जी, यस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ में गिव एंड टेक है ना. जिस तर੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਨਾ ਲਓ. ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਬਿਟਵੀਨ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਕ them for granted, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਫਾਲਟਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ. ਇਨ ਅਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ उस चीज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਪਸੰਦ ਵਹੀ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਹੈ ਨਾ. ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟ ਯੂ ਗਿਵ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਪਾ ਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ देयर आर सो मेनी थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਆਵਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ. Bas, this is what I wanted to say. Thank you, Gigi. You said very well. You pinpoint ਕੀਤਾ ਕਿ husband and wife ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, we never, I mean, it is brothers, sisters, or sisters, brothers, and other family members. We don't go to fight the longer length or affect too many. There are effect on the families, but as compared to the husband and wife, this is a relation with the bigger one. And when we talk about the word relationship, automatically comes into the mind of a husband and wife. You don't think of my sister's relationship with me or my brother's relationship with me or my uncle and aunts, right? When we talk about I'm in a relationship, when you say the word I'm in a relationship, you automatically think, oh, it's a male, female, and an opposite, and possibly like a marriage or into that kind of thing. When you say I'm in a relationship, don't say I'm in a relationship with my brother or with my sister. You don't say that word. So that's what I was thinking. Hanji, Basant ji. Basant ji? Okay. hanji, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, आवाज साफ नहीं आती कैमरे से. तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में किसी को भी पूरा आसमान नहीं मिलता. ये पहले भी एक बार बात हुई कि रिलेशनशिप के लिए कुछ सब्र करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है. और
आपने एक बात नोट की होगी कि जेंट्स कितने चुटकुले बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं लेडीज पे। अगर इतने जोक्स जेंट्स पर बन जाए ना तो वो कहीं के ना रहे। ये लेडीज में इतनी ज्यादा टॉलरेशन है। मतलब मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि थोड़ी सी टॉलरेशन हमें भी लेनी चाहिए इनसे। थैंक्स, इट्स ऑल। Thank you very much, Bisanji. You said very well. Okay, now Ariana. Yeah, you have to say something. You are muted. Oh, I was trying to learn how to unmute myself. Sorry about that. You guys can hear me clearly, yes? Yeah. Beautiful. I am outside. I did want to add absolutely amazing presentation, my friend, because I was super tuned into it and I understood so much of it. I was actually showing some of my team a few of your slides. It's really, really awesome to see. And right now, I'm tuning in, tuning out, so please just bear with me. I think I may repeat something that you guys have already talked about. Go ahead. But I really I believe in terms of communication and relationships, it's so important to with your partner to really be open with your communication, to be honest with communication between the two of you. And communication lies so much than just verbal. It lies in the body language that you hold. It lies in your thoughts. It lies on the two share the same thoughts. Okay, well, if you don't share the same thoughts, it's okay. Can you find middle ground? Right? And I think that's one of the strongest things about relationship, especially because that relationship with one person, yourself, and one other person, can also rely on the relationship between you and yourself, right? And I want to say amazing presentation, absolutely amazing presentation. Thank you very much. I appreciate your taking time to watch it and your input. Of course. I appreciate that. I loved it. We have a little bit of your voice breaking down, but because Sorry. you're outside. No, that's okay. We understand that. Yeah. And you said it very well. A relationship mostly is when we talk about any relationship, we hardly ever talk it other than a spousal kind of a relationship, I say. Yeah. You don't talk about your son's relationship openly, your daughter's relationship openly, or your brothers and other family members. Yeah. And that's where also comes the points when saying, oh, this person did more, this person did less, or why not this, why not that? In other relationships, there are very few questions of that type are there. It's not that they're not there, very few. But I appreciate your time and your input. I really appreciate watching this. Thank you so much for the invite. And thank you all for input too. I really like hearing a group of like-minded individuals coming together and learning from each other. I really like learning and understanding from each other and sharing each other's thoughts. Obviously, there's a few things I couldn't understand, but I think we're on the same page. Well, thank you very much. I tried my best. Yeah, we try to do more, mostly in English, but then no, also... don't even mind. You know, I tuned into my other languages. I just tried, but I am tuned off just because I am going to keep working. But with that being said, again, thank you all so much for the lovely invite, and thank you, Madan, for the amazing presentation. Okay, I hope I hear from you guys soon. Have a nice and safe evening. Thank you. Bye bye. Okay. Zubeda ji. जी जुब्दा जुब्दा जी सबसे पहले तो मदन जी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, बहुत आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ भी सारी आई है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लेकिन ये था कि इतनी इजी इंग्लिश थी कि मुझे सारी अंडरस्टैंड होती रही। और रिलेशनशिप की बात जो है वो सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं होता कि एक जो है वो अपने रिलेशनशिप को बचाता किसी भी रिश्ते में, वो बहन भाई का हो, माँ बाप का हो। माँ बाप तो खैर एक सेपरेट चीज है, माँ बाप ही होते हैं, लेकिन बहन भाई हो, हस्बैंड हो, इन लॉज हो, जो भी हो,
उन सारे रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं होता, सबको इक्वल चलना पड़ता है। एक बंदा रिश्ते निभाता रहे, रिलेशनशिप को कायम रखता रहे, अगला बंदा जो है वो रिलेशनशिप में आना ही ना चाहे तो फिर थक हार के एक बंदा तो चुप करके बैठ जाता है ना, ठीक है भाई नहीं तो ना से। तो रिलेशनशिप के लिए वाकई सही है कि आपके इक्वल होना चाहिए, कि आप अगर कोई आपकी केयर कर रहा है तो आपको भी उसकी केयर करनी चाहिए। तो लेकिन मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बैड है, ये मैं कहूंगी कि सिर्फ हम पे ही फर्ज नहीं है कि रिलेशनशिप को कायम रखा जाए, तो हम भाग भाग के हमने भी भागना छोड़ दिया। हमने भागना छोड़ दिया है रिश्तों के पीछे, कि जब कोई रिश्ता मिलना नहीं चाहता हमने कहा ठीक है सलाम अलैकुम। नहीं, आपने बहुत ठीक कहा जबदा जी। हम आई डोंट नो इज राइट और रॉन्ग है, पहले मैं कह दूं, वी ऑल यूजिंग द वर्ड इक्वालिटी, इक्वल 50%, 50%. In my opinion, it doesn't happen all the time 50-50. Sometimes maybe 60-40, sometimes maybe 70-30, sometimes maybe 45-55. When you are stick to the word saying exactly 50-50, then things may not work, right? So जैसे आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं ये तो नहीं कह सकता किसी को भी, क्योंकि मैं आप किसी की भी स्टोरी जानता नहीं हूं। कहीं ना कहीं आपने खुद ही कहा कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को लेके आप किसी चीज की हद आ जाती जब आप कहते हैं कि अनफ इज अनफ, राइट? तो जितनी आपने कोशिश की उसको वेट रखने के लिए तो आप रखा, नहीं तो वो हो गया। अभी मेरे को एक बीच में बात याद है कि आपने सबने सुनी होगी, देखी होगी, मंकी, बंदर एंड 2 बिल्लियां। सुनिए स्टोरी मंकी एंड 2 बिल्लियों की। एक ब्रेड का पीस लेके 2 बिल्लियां आई, तो वो कहती मेरे को आधा करने के लिए लगे, तो वो उसने क्या किया, उसे लेके आधा आधा करके वो तकड़ी में रख दिया। तो जिसका पासा भारी होता था उसमें से काट के खा लेता था, तो दूसरा फिर चेंज हो जाता था। इस करते करते वो सारा खा गया। तो इसमें से ये भी कभी भी लेसन है इस बात में से, जो मैं नहीं कहता कि होगा, मैं कहता हो सकता है कि जब कोई तीसरा आदमी 2 के बीच में आ जाता है तो वो शायद उसको और खराब कर दे। सही, ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप खुद ही अपना आप ठीक कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। मैं तो मदन जी बस एक बात कहती होती हूँ अपने बारे में कि हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। पर ठीक है, देखिए ना। हाँ जी, हम फिर भी खुश हैं। ठीक है, अगर हमने बहुत दौड़ा है कि रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड हो गया, भाई हो गया, सिस्टर हो गई, लेकिन जब आगे से कोई आपको कोई अप्रिशिएटिंग नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो फिर इंसान कहता ठीक है अभी तुम वहां खुश, हम यहाँ खुश। देखिए वो एक कहीं ना कहीं लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ती है ना। हाँ जी, तो जहां आप ठीक समझते हैं वो आप कर देते हैं अपने समझ के मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच मदन जी। और कोई जी? जी अंकल। हाँ जी। मैं ज्ञानी गुरदीप जी को भी वेलकम करूंगी। आई डोंट नो उन्हें हमारी आवाज आ रही है कि नहीं, और मैं चाहूंगी कि अगर पीसीएच से हैं, पीसीएचएस से, अगर अविनाश जी भी कुछ कहना चाहें, अगर आप हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। और अविनाश जी को भी। और आज बहुत हैरत की बात है कि प्रभा जी का अभी तक हाथ खड़ा नहीं हुआ। आई होप शी इज फीलिंग ओके, दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो बात करूंगी अंकल मैं थोड़ी सी, जो बात की थी नरिंदर आंटी ने कि दोनों को करना चाहिए, तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल है, यस, बट आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई 50%। ठीक है, मैं अगले की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। हाँ, मुझे अगर अपने बच्चों के साथ रिलेशन रखने, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैं करूंगी 50%, वो जो मेरा है उसकी पूरी एफर्ट करूंगी। कम्युनिकेशन हम क्यों ये लेके आए हैं टॉपिक, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। रिलेशनशिप में हम लोगों को कम्युनिकेशन नहीं सिखाई गई। हम तो उस दौर के समझा करते थे नजरों ही नजरों में तेरी मेरी बात चली, ठीक है,
नाराज हुए तो मुंह उधर कर लिया, वो बताया ही नहीं किस बात पे नाराज है, खुद ही सोचता रहे अगला किस बात पे नाराज है। और ये दोनों साइड्स के लिए। मेरे बच्चे जैसे मुझे पैसिव अग्रेसिव कहते हैं, मैं आमतौर पे नहीं उनसे शेयर करती मुझे उनकी क्या बात नहीं पसंद आई। मैंने गुस्से में खुद ही सफाई कर लेनी, उनको 2 दफा कहा कर लो, नहीं किया, क्योंकि वो कम्युनिकेशन हमें सिखाई नहीं गई है कि अपनी बात को करो। हम लोगों को ये पता है कि हनीमून पीरियड मनाया जाता है, वो हनीमून पीरियड इसीलिए होता है कि 2 लोगों में कम्युनिकेशन डेवलप हो, वो एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। हो सकता है वो पहली दफा एक दूसरे को मिले हो शादी पे, वो ना जानते हो, या हो सकता है वो पहले जानते हो लेकिन इकट्ठे टाइम नहीं गुजारा। तो वो जो आपने बात की ना किसी तीसरे की, उस वक्त किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, उस वक्त उन दोनों में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। होता यह है कि हमें अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाया जाता। हमें नहीं पता कि हमारा जो रिलेशन मेरा किसी एक के साथ है उसको बाहर से कितना डैमेज हो सकता है, हमें प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाया जाता। इसी तरह हमारी अंदर भी तो डार्क साइड्स हैं, हमें अपनी डार्क साइड से भी अपने रिलेशंस को बचाना होता है। ये मुझे ही पता है कि मैं किस बात पे जल्दी गुस्से में आ जाऊंगी या चिढ़ जाऊंगी, तो मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, मुझे उसको बचाना है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं जो हमें नहीं सिखाई गई, हमें वो टूल्स नहीं प्रोवाइड किए गए। आज जो मदन अंकल ये टॉपिक लेके आए, थैंक यू सो मच मदन अंकल फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। यस, वी नीड ऑल दिस करेजियस कन्वर्सेशंस। इसमें बात हो कि हाँ स्पाउस का क्या रोल है, क्यों अज्यूम किया जाता है कि औरत ही बर्दाश्त करेगी। जैसे गुलनाज ने टॉलरेंस की बात की, मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंस एंड टॉलरेंस 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप पेशेंट रहो बट यू डोंट नीड टू टॉलरेट, उसकी जरूरत नहीं है। उस पॉइंट पे जब आप आते हो तब इसका मतलब है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कहीं, क्यों एक शख्स बर्दाश्त करे। लेकिन वो बात किस तरह करनी है, अपनी बात अगले तक कैसे पहुंचानी है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने गुस्से में बात की तो वो बात नहीं पहुंचेगी, वो कभी भी नहीं पहुंचेगी। मैंने कहीं पढ़ा था जब हम लड़ाई करते हैं तो हम इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं, तो उसका जवाब था कि हमें लगता है कि अगला हमसे बहुत दूर है, उसे आवाज नहीं जा रही, इसलिए हम चीख चीख के बात करेंगे। कहाँ तो हम पिलो टॉक्स वाले हैं और कहाँ हम चीख चीख के बात करते हैं। तो द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंकल ने जैसे आज बहुत सी इसमें बातें की, दो हम सबको किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई अंकल के साथ इख्तलाफ है, हम कहते हैं कि नहीं अंकल ये बात ऐसी होगी, वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, यस ठीक है। इसीलिए हम लोग ये लेके आते हैं डिस्कशंस कि हाँ आप बताएं। हमसे पहले की जो जनरेशन थी उसने ये सीखा कि मुंह बंद करके जिंदगी गुजारे जाओ। आप 50 years 60 years 70 years एक साथ गुजारे, लड़ लड़ के मर मर के, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी, लेकिन चूंकि ये कहा गया था कि निभानी है, ठीक है। ये सिर्फ औरतों की तरफ से नहीं है, मर्दों को भी निभानी थी, उनके ऊपर भी एक कल्चर की जिम्मेदारी थी। वहां ये लगा कि क्या वो चीज सही थी जिसमें अपने आप को माइनस किया जाता है और रिश्ते को बचाया जाता है। आजकल के दौर में जैसे कि आपने बात की अंकल कि लड़का लड़की क्यों कोर्टशिप चाहते हैं, क्यों वो ऐसे रिलेशन चाहते हैं, वो क्यों कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने हमारी वाली जनरेशन को देखा है सफर करते हुए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरी माँ ने झूठ पे जिंदगी गुजारी है, उसका एक फेस था जो उसने सबको दिखाया, उसके आंसू तो हमने देखे हैं। तो ये जो नई जनरेशन है ये प्रैक्टिकल है, ये कहती है कि हम लोगों ने उस झूठ में नहीं जाना, ये लोग ज्यादा सच्चे। हमें बहुत सी बातें इनकी नहीं पसंद है, ब्लंट है, जो मुंह में आए कह देते हैं, लेकिन वो इस चीज में कहीं सही भी है। वो पहले जानना चाहते हैं, वो कहते हैं बजाय इसके 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद खत्म करें, सिर्फ अच्छा है कि आप देख लें। मैं उस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ जो मैं कहती हूँ कि डेटिंग बहुत अच्छी बात है, डेटिंग करो, आप एक दूसरे को जानो। अगर आप नहीं जानते हो, आपको ऐसी किसी के पल्ले बांध देते हैं, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं मम्मा ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है, उससे बेहतर है कि आप एनकरेज करें। स्पेशली मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ,
मुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम है, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा के लिए अपनी बच्चियों को स्पेस दो दूसरे को जानने के लिए, बजाय इसके कि वो बाद में लड़ती रहें, रोती रहें, घर आ जाएं। आजकल कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी बहुत से पाकिस्तानियों को पता है कि वो किसी ने, इज वेरी फेमस जर्नलिस्ट का बेटा है, उसने अपनी बीवी को डंबल मार मार के मार डाला। हमें उस पॉइंट पे नहीं लेके जाना। गर्ल इज फ्रॉम कैनेडियन। या हमें उस पॉइंट पे नहीं लेके जाना, टॉलरेंस को वहां तक नहीं लेके जाना कि आप बर्दाश्त करते रहो। हमें उस पे आना है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोलो, लेकिन किस तरह बोलना है। ये भी ना हो कि आप अपने घर तोड़ दो। वो जो कहीं कहीं तीसरा शख्स, मीडिएटर, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप दोनों आपस में पूरी पावर से लड़ रहे होते, तो कोई एक बीच में ढाल भी चाहिए होती जो वो एक ट्रायंगल बना दे, आपकी बात दूसरे तक एक बेहतर तरीके से पहुंचे। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं करना चाह रही थी आपसे डिस्कस। हम लोगों को अंकल एक चीज और नहीं हम समझ सकते कि हमारे जितने लोगों से रिश्ते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वैसे वैसे चेंज होती जाती है। मैं अपने तीनों बच्चों के साथ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक बच्चे के साथ डिफरेंट माँ हूँ, एक के साथ टोटली डिफरेंट माँ हूँ। मुझे खुद लगता है जो मेरा रिलेशन जो है वो मेरी मदर से है, वो मेरी खाला से नहीं है। तो कहाँ कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, किससे करनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग उस तरह मोल्ड हो जाते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हैं। हम लोगों को अभी किसने बात की थी, पेरेंट्स की बात की थी कि पेरेंट्स आर पेरेंट्स। नो, पेरेंट्स आर नॉट पेरेंट्स। यहाँ मैं इख्तिलाफ करूंगी। मेरे बच्चों को पूरा राइट है, इफ आई एम रॉन्ग दे कैन क्वेश्चन मी इन अप्रोप्रिएट मैनर। वो पूछ सकते हैं कि मम्मा आपने ये बात ऐसे की थी, ये ऐसे होनी चाहिए। हम पेरेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं, इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी रॉन्ग हो सकते हैं। इज्जत करना अपनी जगह, लेकिन आई थिंक हेल्दी हम लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हम सबको वो राइट है कि अगर कोई गलत लग रही है हमें बात, तो हम कह के तो देख लें। अगेन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशन। आप ये देखें कि आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, चाहे आपका बच्चा आपके साथ है, आपकी फ्रेंड, आपके कुलीग, कोई भी, अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है इट मीन्स कि वो रिलेशन हेल्दी है। अगर नीचे आ रहा है या वहीं रुका है, कहीं कोई गड़बड़ है। क्योंकि अगर मैं अगर मीता जी से मिलती हूँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं तो कहीं कुछ लैक हो रहा है, क्यों, क्या है। तो हेल्दी रिलेशनशिप की जो मुझे लगता है, जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, मैं यही देखती हूँ कि किन के साथ मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसकी क्या वजह है। एक तो चलो दिल का रिश्ता है, दूसरा कि क्लियर कम्युनिकेशन होती है मेरी उनके साथ। अगर कोई चीज नहीं पसंद तो मैं कह दूंगी, अगर कुछ पसंद है तो उसे अप्रिशिएट करूंगी। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बोल गई हूँ। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए थे, मैंने कहा आप सबसे शेयर करूं। बहुत अच्छा किया, तो आपने बहुत अच्छा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, मेरे ख्याल पहले अपने बसंत जी, प्रभा जी थे, कुछ कहना चाहते थे। एक लाइन मैं जरूर कहना चाहती हूँ। उस्मा ने बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स और बड़े प्यार से बताए हैं। कोई भी रिलेशनशिप होती है तो उसमें इंसान को ऐसे फील होना चाहिए कि मैं लिफ्ट हो रहा हूँ, बजाय कि चाहे आपके ग्रैंड चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप की बात, ग्रैंड चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप होती है तो आप एक मोहब्बत में लिफ्ट होते हैं, एक ममता वाली जो आपका जज्बा जागता है ना, उसमें आप एकदम से अपलिफ्ट हो जाते हैं। आप पूरी तरह प्यार से सरोबार होते हैं, एंड जितना प्यार से भरते हैं उतना ईश्वर के, गॉड के, वाहिगुरु अल्लाह के नजदीक चले जाते हैं। तो ये अपलिफ्टमेंट हो रही है। कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है, जब तक हमारी अपलिफ्टमेंट नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। जो हमारी जनरेशन की सिचुएशंस थी अब आगे ना हो, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना चाहिए। हम लकीर के फकीर होके गुजारा नहीं कर सकते। we have to be innovative in our thoughts and in our approach, जैसे कि उस्मा ने कहा, we have to be. Thank you. Thank you, मीता जी। who's next? बसंत जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा
चौहान साहब, आप जब भी कोई टॉपिक लेके आते हैं उस पे इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना अच्छा से मतलब समझाते हैं हमें, और उसके पता लगता है कि आपने कितना उसे टाइम दिया है। तो मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि आप बहुत ही हमें अच्छा गाइड करते हैं। सो नाइस ऑफ यू, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच विशांत जी, अप्रिशिएट दैट। मैं जो भी करके कोशिश करता हूँ जो आपसे अच्छा है कि वो मैं अपनी खुशी करता हूँ। ज्ञानी गुरदीप जी भी आ गए हैं, जो PCH से हैं। हाँ जी ज्ञानी जी। हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी चलो हाय बाय मैं कर देना। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਦੋ ਪਰਸਨ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਆਖਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਪੁਟ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ PCHS ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ। तो अंकल हर प्रभा जी रह गए होना लास्ट में। हाँ जी अंकल, आप गुरदीप जी को और अविनाश जी को, बाकी सबको इनवाइट किया करें। हम हर वेडनेसडे को ही होते हैं। ठीक है, हम ज्ञानी जी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू बहुत मन खुशी है। मैं बहुत खुश होना जो कोई भी मैं प्रोग्राम सुनदा, मुट्टा जी का भी होर सारे दे है ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, मैं चल नहीं सकता ज्यादा आजकल, तो मैं इस करके क्लास अटेंड नहीं कर रहा। हाँ जी, I noticed it। हाँ जी, ते आज दा प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अगर तुसी लड़ोगे ज्यादा झगड़ोगे तो तुसी भी अपने परेशान होगे, फिर कई दिन आदमी परेशान ही रहता है लड़ाई झगड़े करके। इस करके अगर कोई गल मान है वो भी ठीक है, और नहीं मनता उन्होंने भी बस ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैनू कभी तुहाडे प्रोग्राम होंदे ना, मैं वो जरूर सुन लेना। थैंक यू जी। थैंक यू तुहाडा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਗੁਰਨਾਥ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ जी मुझे भेज दीजिएगा कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ जी, अपने प्रभा जी। और मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र मेहरा। हाँ जी जिंद्र जी, प्रभा जी का हस्बैंड। हाँ जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस ये कि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, जिस वजह से हम पूरा नहीं अटेंड कर पाए। पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ जितनी सुनी समझी उसके हिसाब से उस्मा जी का सुन के बहुत ही ऐसा लगा कि बिल्कुल जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल रही हैं, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और मीता जी के भी कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, और आप लोगों के जैसे जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मुझे कहना है कि हमारा भी एक रिलेशनशिप ही है एक तरीके से। हमारी शादी को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा परेशानी नहीं आई जो आजकल के परिवारों में सुनने में या छोटे बच्चों में, लड़कों में होती है। रिलेशनशिप आजकल क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि हम पे कोई लायबिलिटी आए या कुछ वो आए। लड़की अपने तरीके से जिए, लड़का अपने तरीके से जिए, कोई इंटरफेरेंस ना करे, फ्रीनेस हो ज्यादा। लेकिन हम जैसे माहौल में पैदा हुए, हमने आज 6 पीढ़ी देख ली। अपने दादा की भी देखी, अपने फादर की भी देखी, अपनी भी देखी, अपने बच्चों की देख रहे हैं, अब उनके बच्चों की भी देख रहे हैं। तो उन सबको कंपैरिजन करते हुए हमें लगता है कि शायद ठीक है, हम लोगों को पहले दबाया जाता था थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं, एडजस्टमेंट जब भी होते थे और हम लोग बहुत खुश थे। आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी बातों के ऊपर टेंस हो जाते हैं। आपस में 2, 3, 4, 5 साल रहे रिलेशनशिप में, पता लगा तो अपना रास्ता देख और मैं अपना रास्ता देखूं, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता हम लोग। मैं नहीं कह सकता सब क्या ओपिनियन है। आजकल नई जनरेशन बहुत कुछ ऊंचा सोचती है, ज्यादा कुछ समझदार है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है, वो ज्यादा नॉलेज गेन करे हुए हैं। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से जो सीखा, संस्कार सीखे,
मैं अपने उससे कह सकता हूँ कि हम लोगों की 50 साल की लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मेजर झगड़ा नहीं हुआ कि कोई सुन पाए या बड़ों को दखलंदाजी करनी पड़े या कोई मजाक हो। तो ये सब चीज जो बड़ों के संस्कार है, मैं तो समझता हूँ कि रिलेशनशिप में वो भी रिलेशनशिप था, लेकिन उसके अंदर त्याग की, समर्पण की भावना थी, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, त्याग था, एडजस्टमेंट था, जो आज के टाइम में थोड़ा कम नजर आता। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम। उर्मा जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई, कहीं मैं समझ रहा था, सुन रहा था उन चीजों को भी। तो यही है कि जिस रिलेशन के अंदर त्याग और समर्पण है, एक दूसरे का एडजस्टमेंट है, वो रिलेशनशिप तो चलते ही चलता है और बहुत अच्छा है। और जिसके अंदर इस चीजों का ध्यान नहीं है और अपनी अपनी खींचातानी और अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जहां आ जाएगा, वहां रिलेशन नहीं चलता। तो मैं देखिए, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बाग हैं, आप लोगों के बीच में मैं थोड़े से 2 शब्द जरूर कह रहा हूँ। तो मुझे जो लगता है कि रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट और एक दूसरे को समझने की शक्ति जरूर होनी चाहिए। बाकी समय है, जो करा दे उस ठीक है, सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इस काम के लिए कोई पीएचडी नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के लिए कॉमन सेंस जो है इंसान की, जिसमें भी जैसा भी रिलेशनशिप है उसका, मेरे अपने हिसाब से उसकी ज्यादा जरूरत है देन के पीएचडी इन समथिंग। इन्होंने जो कहा है ना, वही मैंने अपना बताया, अपना तजुर्बा अपनी लाइफ का। अब इसे रिलेशनशिप कहिए या जो भी एडजस्टमेंट कहिए, ये चीज जो है आजकल नई जनरेशन इसको रिलेशनशिप कहता है। पहले हम आपस में एडजस्टमेंट, शादी ब्याह, हर कुछ बड़े अच्छे तरीके से करते थे, बहुत एंजॉय होता था, बहुत मजा आता था। अब तो वो सब चीजें बहुत दूर हो गई शायद। और आप तो हम लोगों के टाइम के ही हैं, समझिए, तो आप ज्यादा समझते हैं इस बारे में। हो सकता है मैं ना जो कहना चाहता हूँ ना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने जो मन में भावना आई थोड़ी सी वो मैंने कही। आपने बहुत अच्छा कहा। आपने कहा, इन्होंने कहा कि 50 साल हो गए, हमारी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी रही। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि इनके पीछे एक ही तलवार टांगी हुई है। I was looking at that, Basant ji, but I didn't think of that. मैंने जहां भी देखा है 2 तलवारें होती हैं क्रॉस की हुई। ये हमारी खानदानी तलवार है, हम लोग क्षत्रिय हैं, तो हमारी खानदानी तलवार है। वो ठीक है कि सब ये आपकी तलवार के कारण सब शांति है घर में जी, आपकी तलवार के कारण घर में शांति है। ढाल भी है, उसके साथ ढाल भी है, ढाल भी है। तो एक ने ढाल बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रही है आपने, भी एग्री विद। तलवार से बचाव को ढाल भी तो जरूरी है। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे चुटकुला याद आ गया, बात तो मुझे क्या आगे नहीं इन्होंने कहती, इनकी बात पे हंसी आ गई कि तलवार एक है इसके ऊपर। एक परिवार था, वो हंसता ही रहता था, पति पत्नी हर समय हंसते रहते थे। पास पड़ोसी के लोग, कॉलोनी वाले हर समय कहते थे ये जोड़ा बड़ा मस्त है, हर समय ही हंसता रहता है यार, कभी पूछना चाहिए। पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे जाए कैसे पूछे, आप क्यों हंसते रहते हो। फिर एक बहुत ही समझदार आदमी को चुना गया कि तुम जाओ और पता करो। तो वो गया वहां पर और उसने बात जानने की कोशिश करी, आप लोगों में तो बहुत अच्छा लगाव है, आप लोग हंसते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। कहने लगे नहीं नहीं अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है आपको तो अच्छी बात है। जब उसने बहुत फोर्स करा तो उसको अपना राज खोलना पड़ा। कहता है जब मेरी बीवी मुझे बेलन मारती है ना, और जब मुझे नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ, और जब वो बेलन मारती है मुझे लग जाता है तो मेरी बीवी हंसती है। तो हंसना तो है ही हर हालत में। ऐसे गुड वन। अब एक बेलन भी पीछे लटका। मोनी जी आपने कुछ कहना? बड़ा सीरियस टॉपिक हो रहा है, थोड़ा सा आजाद। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया सादिया। मोनी जी आपने कुछ कहना? नहीं जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप सबकी बातें सुन के। मेरे पास कोई खास इंटरेस्टिंग चीज नहीं, जो जो आपने कहा है वो सत्य वचन है।
कि कैसे हम एक दूसरे को जानते हुए वी हैव टू टॉलरेट ईच अदर. दैट्स हाउ व्हाट द मैरिज इज ऑल अबाउट. मेरे भी 50 साल से ज्यादा हमने सेलिब्रेशन की थी, और अब भी मैं देखती हूँ कि मुझ में टॉलरेंस है. बच्चों की टॉलरेंस और तरीके की है, बट जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं चुप करके पी जाती हूँ, बजाय कि मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं सजेशन दूंगी तो जैसे वो कहते हैं ठीक है बेटा. दैट्स माय ओपिनियन. आपका मैं तब से सुन रही हूँ, आपने 4:15 से बहुत अच्छा सेशन होता है मदन जी, एंड आई अप्रिशिएट हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव टू टॉक अबाउट इट. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आपकी बात सुन के मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि हम लोग भी यहाँ परिवार में रहते हैं, बेटा बहू के साथ में, और हम लोग पुराने अपने विचारों के होते हुए थोड़ा सा कई दफा टोक देते हैं. कुछ बातें या नई जानकारी होती है यहाँ के हिसाब से, आजकल के हिसाब से, तो वो हमें समझाते हैं. तो हमें ये लगता है कि हमारे गार्जियन है, और अब तो हमने मान लिया है कि हमारे बच्चे हमारे गार्जियन है, हमको सिखाते हैं ऐसे नहीं ऐसे है जी, अब ये है ना वो होना, ठीक है. मगर मेरी आदत है, मैं टोकती नहीं हूँ. मैं टोकती नहीं हूँ, मैं पी जाती हूँ उस बात को. जैसे कर रहे हैं ठीक है. नहीं, टोकने से बहुत समझदार है. टोकने से वो झंझट आप जानते हो. बेटा बेटा बहू और बेटी जवाई का रिश्ता डिफरेंट होता है. वही मेरी तो बेटी कोई है नहीं, मगर बेटी और जवाई का रिश्ता बेटे और बहू से बिल्कुल अलग है. बिल्कुल. आप वो चीज आप बेटी को बोल दोगे, मगर वो चीज बहू को नहीं बोल सकते. फर्क है जी उसके अंदर. ये है कि बेटे को ले जाती है बहू और बेटी को ले जाते हैं जमाई. हम रह गए देखते हुए, खोल के रह जाएगी. हाँ नहीं, वो ना ये मेरी बहन के ससुर कहा करते थे कि बेटियां ले गए दामाद और बहुएं ले गई पूत, हम रह गए ऊत के ऊत. बिल्कुल सही, आपने सही नहीं जी, पकड़ा. मैं ऊत की ऊत तो नहीं रहूंगी, बट लाइक आई सेड मेनी टाइम्स, आई हैव दिस क्वालिटी गिवन बाय गॉड. उसको सहन करो, सहन शक्ति, बस वही है मेरे अंदर, और कुछ नहीं है. नहीं, बात क्या होती है कि सपोज करो अपने हस्बैंड और वाइफ के अंदर ना, मैंने जो पैतरा आजमाया है वो तो यही आजमाया है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो एक जैसा होता है. बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, पर ढूंढ लो तो बड़ा मजा आता है, बहुत बढ़िया रहता है. हमने जोड़ रखा है, जब हमें गुस्सा आता है या कुछ थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर ताश खेलते हैं हम लोग. तो ताश खेलते हैं तो उसमें थोड़ा जितना, जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो हारते मेरी थी, इसीलिए हारे, आपने मुझे गुस्सा दिलाया. एडजस्टमेंट, हस्बैंड एंड वाइफ में एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि, मैं अपनी बात अच्छा बताती हूँ. मेरे हस्बैंड मेरे को कहेंगे फलानी चीज नहीं करनी, मैं नहीं करती, चाहे मैं पी जाऊं गुस्से से, मगर वो नहीं करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कनाडा में आई, रेडियो स्टेशन थे, अब नाम भी भूल गई हूँ, लाली का था तो अग्रवाल का था. 1-2 बार गाने गई वहां पर, और रात को वहां रिकॉर्डिंग करते हैं देर से. मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है पड़ी हुई, रिकॉर्डिंग देर से करते हैं, तो मैं घर में जब रिकॉर्डिंग के बाद आए 2 बज जाते हैं. सुबह स्कूल चली गई, बिकॉज आई एम स्कूल टीचर. तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये कोई अच्छे औरतों का काम है रात को 2 बजे घर आना. मैंने कहा आई एंजॉय दिस थिंग. तुझे कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो प्रोग्राम चलाना चाहते हैं. रात को 2 बजे घर आना ये हमारे घर की औरतों का काम नहीं. छोड़ दिया. वेरी गुड. नहीं गई, मगर मन मार लिया, हाय मैं करती थी. मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, कई दफा गई हूं मैं. आपका सब ये मन रखते परिहार का कई लोग जानते होंगे उन नामों को, लाली का, परिहार का, अग्रवाल का. रेडियो स्टेशन होते थे, मगर पैसे नहीं मिलते थे मुझे गाने के लिए. तो मेरे हस्बैंड बोलते किस लिए जाती हो, और 2 बजे रात को अच्छी औरत कोई घर नहीं आती. तो सुबह स्कूल जाना. मैंने कहा आई एंजॉय दैट. मेरी सहेलियां कहती है तेरे को आज देखा था टीवी पर.
मना किया, मना हो जाओ तो घर में शांति हो गई। कितने साल इकट्ठे गुजार लिए, 50 साल से ज्यादा इकट्ठे गुजार लिए इसी चीज में। तो मोहिनी आंटी, हाँ विद जी, ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो आपने बात की एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सेक्रीफाइस है। आपने अपने शौक को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अगले को फर्क नहीं पड़ा, नहीं, लेकिन मुझे फर्क पड़ा। मैं वो नहीं रही, मैंने अपनी जात से उस चीज को माइनस कर दिया। अगले को फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मुंह से। तो ये जो आज की बात है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि हमारे में वो कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है कि हम अगले को बता सकें कि मेरा दिल चाहता है मैं ये करूं। अच्छा, मैं महीने में 4 दफा नहीं, एक दिन जाऊंगी और मैं 6 से 9 बजे आऊंगी। दैट इज एडजस्टमेंट, नॉट सेक्रीफाइस। हम लोग जो कह रहे हैं कि हम सेक्रीफाइस करते आए ना, और अब हम क्यों कहते हैं कि नई जनरेशन जो है, क्योंकि दे आर वेरी फर्म, कि अगर वो हमारे साथ ऐसे, वो आपस में भी ऐसे हैं। वो नहीं मानेंगे, आजकल की जनरेशन नहीं मानेगी। जी हाँ, क्योंकि वो बताएगी कि देखो तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, मैंने करना है। वो यही और एक बात बताओ, स्कूल में क्रिसमस आ रही है, सब स्कूल ने कहा, बकार्डी ने हम लोगों को, ये होली क्रॉस की बात है, बकार्डी ने हमको इनवाइट किया है कि ब्रिंग द होल स्टाफ एंड वील गेट दिस बिग बॉटल ऑफ रम। यहाँ बेकार्डी है कहीं पर स्टील तो स्कूल के सब लोगों ने कहा, उसने कहा कितने लोग आ रहे हैं, हमारा 40 लोगों का स्टाफ था, कितने लोग आ रहे हैं। सेक्रेटरी जो है वो पूछती है सबसे, दस्तखत करा लिए, मोहिनी तुम्हारा नाम नहीं आया। मैं अपने हस्बैंड को कहा हम लोग बेकार्डी पे जा रहे हैं, वहां क्या करना है तूने? मैंने कहा वो बोतल भी देंगे जो यू लव टू ड्रिंक दैट यू नो। नहीं मुझे नहीं चाहिए वो बोतल, कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जी सेक्रेटरी को बोला मैं नहीं जा रही। स्टाफ रूम में बैठ के कहती है, मोहिनी's husband said you can't go, so she said I'm not going। मैं वो चीज हूँ। तो मोहिनी आंटी, आप में से कितने डन रंगीन स्कूल जाते थे और कौन से ईयर से जा रहे हैं? जब से मैं रिटायर हुई। कौन से ईयर से? गुलनाज को भी पता होगा। अब मुझे याद नहीं मैं किस ईयर से रिटायर हुई हूँ। ठीक है, तो मेरे 2 बच्चे जो हैं वो डन रंगीन स्कूल से पढ़े। हाँ जी। बट आई वॉज नॉट अलाउड टू गो फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग। तुम्हारा क्या काम है वहां जाना? तो ये तो बहुत दूर की बातें हैं कि स्टाफ की वो है। एडमिशन हो गया हम्बर कॉलेज में, तो ये कहा गया कि तुम्हें इजाजत किसने दी है कि तुम अटेंड करोगी। इस तरह की बातें होती हैं, तो बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो कुर्बानियां की ना, तो इट वाज सक्सेसफुल। घर में कोई ऐसी अशांति नहीं हुई। देखिए मोहिनी जी, मुझे आपकी बातों को सुन के लग रहा है, मुझे सुन के लग रहा है कि उस समय उनके हस्बैंड ने उनको कहा और उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम तो इनके गाने को आज भी इंजॉय करते हैं। इनकी आंखों से भी म्यूजिक चमक लगता है। क्या है, इतना अमृत निकलता है इनकी। अभी ये गाना नहीं गा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल म्यूजिकल वर्ड्स हैं इनके। तो आपका देखो, हम सारे लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपका सम्मान दे रहे हैं। उस समय क्या आपकी कुर्बानी छलक छलक के हमारे पास आ रही है और आपको वो इज्जत बख्श रहे हैं। देखिए आप हम सबके लिए एक कोकिला है। आप देखिए ना वहां पे मोहिनी जी पे आ जाओ कि गाना सुनाई दो कोई। मैं रिक्वेस्ट करने वाला था, शायद वो आप नहीं करेंगी या करेंगी। मैं वही मैंने थोड़ा सा बोला था, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। अगर वो आपको याद है तो सुना दो, नहीं तो कोई और सुना दो। नहीं वो तो गाना नहीं आता। चलो और कुछ सुना दो। अच्छा वो किताब देना वालों ऊपर। आज कमला जी भी पीछे है पर्दे के, खोला नहीं उन्होंने, नीलम जी ने बंद कर लिया। बरिंदर जी की सिर्फ स्माइल है आज प्यारी सी, वेरी कैलकुलेटेड स्माइल। मोहम्मद रफीक जी भी हैं, वो नहीं बोले। जी हाँ, मदन अंकल आपका देखिए इतना अच्छा है कि टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, लेकिन सब बैठे हैं। टॉपिक बड़ा हॉट था और अच्छा था, बहुत रिलायबल। मतलब सच्ची में ऐसा लगता था हमारी जिंदगी के कोई सितारों को छेड़ रहा है जिसे। ये कमला जी भी आ गई। मोहिनी आंटी आपका गाना सुनने के लिए उन्होंने कैमरा खोला है। हाँ जी मोनी जी सुना रही हैं अब।
सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए बीती हुई बात हम तो, हुए बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे दिए हम, लगन की अगन में अभी तक जले हैं, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, उदासों के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है, बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी, किसी के लिए कोई रुकता नहीं है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, नए गुल से गुलशन को आबाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए बीती हुई बात हम तो, हुए बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, चिराग अपनी धरती का बुझता है जब भी, सितारे तो अंबर के होते नहीं है, कोई में जब डूबती है, किनारे तो सागर के रोते नहीं है हम डोलती नाव ढूंढे तो क्या है हम नाव ढूंढे तो क्या है, किनारे हो तुम न फरियाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। बहुत अच्छा। हाँ मोनी जी कमाल कर दिया आपने। नीच गई, आंखें नहीं खुल रही थी। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। कितने अच्छे तरीके से क्लोजर हुआ आज के प्रोग्राम का मोनी आंटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
I enjoyed every bit of it for these 2 hours. Madan ji was talking and explaining and everybody participated, though I don't interfere in between, but I just love it. So मेरा दिल करता है इस समय मदन जी को हक कर लूं and कहूं thank you. I hug my didi. Thank you. Thank you. So इस उम्मीद के साथ कि आप सबको हम फ्राइडे को मिलते हैं 6 o'clock. We are bringing South Asian Legal Clinic. तो कोई लीगल इश्यूज कुछ हो आप लोग मुझे पहले भी भेज सकते हैं so that I can send it to them. कोई कंसर्न हो कुछ है आप शेयर करें. बहुत से लोगों को लीगल हेल्प चाहिए होती है, उन्हें पता नहीं होता, तो फ्लायर शेयर कीजिए लोगों के साथ, लिंक शेयर कीजिए. Friday 6 to 8 we will see you. Thank you so much. Thank you, Sabika. Thank you, Madan Uncle. Thank you, everyone. Thank you very much. Very, very thanks. आपके सारे कमेंट्स का और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. God bless. Thank you. Good night. Thank you, Madan Uncle. Thanks to Modern Women Council. आपका अगला प्रोग्राम देखने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू सी. जैसे शौरी अंकल कहते हैं ना, बहुत मेहनत करके लेके आते हैं सारा कुछ. उस्मा जी आपने बहुत छुपे रुस्तम छिपा रखे हैं. बहुत बहुत कलाकार हैं आपके पास जो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं. अंकल आई थिंक नवंबर में आप हाँ जी मैंने भी तो सेंड कर दिया करो प्रोग्राम जेडे. मदन अंकल आप मुझसे शेयर कर देंगे मैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपसे फोन नंबर शेयर करता हूँ. और ज्ञानी जी गुरदीप. हाँ जी. सो गुरदीप जी 80 वेडनेसडे ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 to 6. ਹਾਂਜੀ 80 4 to 6 ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਔਨਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਨਾਸ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਗੁਲਨਾਸ ਐਡ ਕਰ ਲੈ. Thank you so much, Neelam, throughout आपके हाल है. Very good.